हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं आप लोग? आज संडे है। आई होप आप लोग संडे एंजॉय करते होंगे। जो टेस्ट मैच देखते हैं, जो टेस्ट मैच को पसंद करते हैं, हु रियली लाइक टेस्ट मैचेस, दे वुड बी वेटिंग फॉर एशेज। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है, काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। आज एक हफ्ता हो गया। आई मीन लास्ट वीक वी वर हार्ट ब्रोकन एज इंडिया लॉस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स। सो ये वीडियो में मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी इंडियाज स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल विच स्टार्टेड विद एशेज। कैसे क्या इंडिया को प्लानिंग करनी पड़ेगी ताकि इस टाइम not only they should qualify for finals but they should win as well. The first two World Test Championship cycles were pretty good for India. Yes, they could not win the finals, but even qualifying for final and being runner-up is not a small feat. Trust me, ये कोई छोटा achievement नहीं है. Talking about England, they could not qualify. Talking about South Africa, they could not qualify for finals. Talking about Australia, they were qualified only for this time. So India was pretty consistent, and they have not qualified, unlike other teams. Like first World Test Championship cycle में New Zealand, they qualified for finals only on the basis of their home win. Unlike India, similarly इसमें भी इस series में भी Australia, they won a lot at home. Including 5-0 against England. Then they won against West Indies, Bangladesh. I mean, they win matches against weaker teams, and they were able to qualify. But if you compare it with India, दोनों cycle में India defeated some strong teams at their home to qualify for the final. So it was not a small achievement, but yes. Final जीतते तो कुछ और बात होती, it would have been cherry on the top. Anyways, we are going to discuss it in detail, but before I start this video, once again a humble request, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। I've created a lot of videos on IPL, on Indian cricket. The last one was on Ashes. Please watch them, give your valuable feedback on that. अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या चेंज हो सकता है, and you can share it with your friends in your in your social groups. अगर आप चाहें तो आप इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, मेरे लिंक को व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी मेरी वीडियो को देखें। नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊं आप उसे देख सकें और उस पर अपने कमेंट्स दे सकें। मेरा ये यूट्यूब चैनल काफ़ी न्यू है, जस्ट फ्यू मंथ्स अगो आई हैव क्रिएटेड इट, एंड all new subscription they act as a motivation for me. अभी बहुत ज़्यादा subscribers नहीं हैं, but I'm happy whatever progress I have done till now. बाकी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2026 से 2025 में जो होने वाला है उसमें इंडिया के शेड्यूल क्या है। सो आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑन द स्क्रीन। सो इसमें इंडिया का जो ओवरसीज टूर है वो है इंडिया इज गोइंग टू टूर इन वेस्ट इंडीज़ जो अभी जुलाई में होगा। देन इंडिया विल टूर टू साउथ अफ्रीका, and the last will be India tour to Australia, जो होगा आपको 2024-2025 में, and that will be the last series for India. If you talk about home series, so England is coming to India in this cycle. Bangladesh is going to play in India, and there's one more team I forgot. So there are three teams which are coming at home. So what should be India's strategy to win this? That is something we are going to discuss. According to me, these are the three important points on which India should work upon. These 3 points are very important. The first point is avoid knee-jerk reaction. Second is proper planning, and third is mandating all players to play at least knockout of domestic cricket.
सो हम इन तीनों पॉइंट को we will discuss in details. So पहला point है avoid knee-jerk reaction. So I want to say that we Indians, we are very very emotional, and definitely when we watch a cricket, it is kind of a escape route for us. I mean, we are facing a lot of issues in life. It can be work related, it can be personal problems, family issues. There are a lot of issues which we are facing, a lot of problems, a lot of trauma which we are going upon. But whenever we watch cricket, और जब हम देखते हैं हमारी टीम अच्छा खेल रही है, they are defeating others, it gives us a boost. हम सब कुछ भूल जाते हैं, and that's the reason we are very emotionally attached with the team. So जब टीम अच्छा कर रही होती है, चाहे वो IPL में हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, हम बहुत खुश होते हैं, and we feel that we are on top of the world. We treat those players as their demigods. We go out and we whatever interactions they have on the social media, we go ahead and we'll ensure that they are getting the best out of it. But on the contrary, जब इंडिया हार जाती है तो हम बहुत we feel like heartbroken. हमारी सारी प्रॉब्लम्स हमें फिर हमारे सामने आने लगती हैं, and the same time we start saying that सबको बदल दो. They are not able to play. विराट कोहली को क्रिकेट नहीं आती, रोहित शर्मा फिटनेस इशू है, उससे तो भागा नहीं जाता, कैप्टनसी नहीं आती, ये भी उमेश यादव क्यों टीम में है, और ये और वो, and that's okay. I mean, definitely because we treat these cricketers, we have so much expectation. That's the reason we are angry as well. लेकिन definitely to all my friends, ऐसे नहीं चलती cricket. There are a lot of planning which is required. So first and the foremost important point is avoid knee-jerk reaction. Please, that's a humble request to BCCI and to selectors. Don't go for any knee-jerk reaction. पूरी टीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. यही सेम टीम है जो 2 बार फाइनल खेल चुकी है. ये सेम टीम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हराएं, चाहे इंग्लैंड में ऑलमोस्ट सीरीज जीते रह गए. इट वॉज अ ड्रॉ. सो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दी है ये टीम, इसने किया. ठीक है, फाइनल नहीं जीत पाए, बट येस देयर आर फ्यू प्लेयर्स विच नीड्स टू बी चेंज. बट ऐसा नहीं है कि यू नीड टू गो एंड यू नीड टू चेंज द एंटायर टीम. यू आर नॉट सपोज टू प्ले 11 न्यू प्लेयर्स. यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर स्ट्रेटेजी टू बास बॉल, और कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है. आप अगर एशेज देखें तो इंग्लैंड ने बासबॉल के दे अडॉप्टेड बासबॉल, बट ऑस्ट्रेलियन टीम दे हैव नॉट ट्राई टू कॉपी दैट. दे प्लेड देयर नेचुरल गेम. और दोनों के रन रेट में आप देख सकते हैं, दोनों के अप्रोच में देख सकते हैं, ऑन द सेम काइंड ऑफ फील्ड, ऑन द सेम काइंड ऑफ पिच. सो डेफिनेटली इंडिया को कोई बासबॉल को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर प्लेयर्स. Yes, there are few players which needs to be whom India should phase out, but पूरी टीम को बदलने की जरूरत नहीं है. सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर प्लानिंग. सो अगर आप देखें, सो जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ प्लेयर्स को फेज आउट करने की जरूरत है, जैसे चेतेश्वर पुजारा. आई नो बहुत सारे लोग they still love Pujara, and I also love him. I love the way he has played so many significant innings for India. He is a selfless player. कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. वो जब चाहें आप उनको बोलो, वो जो चाहे रोल में हो, वो he tries to do his best. बट अगर आप देखें तो वो पिछले 3 साल से उनकी एवरेज 27-28 है. ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप बाकी मिडिल ऑर्डर के देखें, अगर विराट कोहली देखें, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं. रहाणे ही वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट. अभी वो वापस आए, फर्स्ट टेस्ट मैच खेला है जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया है. सो डेफिनेटली वी शुड, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिम बिकॉज इट विल बी अनफेयर टू डिस्कस अबाउट हिम, बिकॉज आप वापसी में उन्होंने सिर्फ 1 टेस्ट मैच खेला. बट अगर आप इसी को कंपेयर करें बाकी टीम से, सो ऑस्ट्रेलिया के लैविशन एंड स्टीव स्मिथ. Look at their middle order: Steve Smith, Travis Head, Marcus Labuschagne. England, Oliver Pope, Joe Root, Johnny Bairstow. You look at any team which are doing good. South Africa में हर एक टीम के जो मिडिल ऑर्डर है, they are performing exceedingly well. यहाँ तक कि बांग्लादेश की भी मिडिल ऑर्डर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है. So that's the reason India cannot even think of winning matches अगर वो they persist with players who have 27-28 एवरेज. बिकॉज अगर आप 3 साल से 27-28 की एवरेज से खेल रहे हो, सो कहीं ना कहीं वो आप टीम को इम्पैक्ट कर रहे हो. ओके, सो डेफिनेटली चेतेश्वर पुजारा
को ड्रॉप करना चाहिए, जस्ट लाइक रहाणे को किया गया था, वो डोमेस्टिक खेले वापस आए एंड ही परफॉर्म्ड वेल नाउ. सिमिलरली ही शुड बी ड्रॉप्ड. किस यंगस्टर को मौका देना चाहिए. इट्स अ राइट टाइम टू इन्फ्लूज यंग ब्लड इनटू द टीम, बिकॉज आप यंगस्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पहले से इसमें चलने लगे, स्पेशली टेस्ट मैच में. दे नीड सम टाइम टू ग्रो एज वेल. और वेस्ट इंडीज सेज इज द राइट टाइम टू इन्फ्लूज यंग ब्लड. आप यंग प्लेयर्स को मौका दें, उनको मिडिल ऑर्डर हो चाहे साइड पोजीशन पे बैटिंग करने की कोई अपॉर्चुनिटी दें. Similarly, in the pace department as well, I know we are doing exceedingly well with Shami, Siraj, Umesh Yadav. ठीक है, WTC फाइनल में अच्छा नहीं खेले, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, स्पेशली हिज रिकॉर्ड इन एशियन कंडीशंस, आई मीन कोई भी किसी पेसर ने इतने विकेट्स नहीं ली जितनी उन्होंने ली, in adverse condition. So he is doing good. Shardul Thakur as an all-rounder, he is playing decently well, but you need to create bench strength, just like the previous bowling coach Bharat Arun did. वो बहुत strong bench strength थी, वो वापस लानी पड़ेगी. Bumrah will be back, but you need to develop more bowlers. Bowlers like Prasidh Krishna, he is recovering. Mukesh Kumar, और भी बहुत सारे bowlers हैं. You need to have at least 6-7 decent bowling attack in your arsenal when I'm talking about seamers. So 6-7 तो minimum होने चाहिए ताकि injuries हो तब भी whomsoever is replacing, he is performing exceedingly well. Similarly, अगर आप स्पिन की बात करें, डेफिनेटली 3 सीरीज इंडिया को होम में खेलने हैं और स्पिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंडिया टू विन दोज. सो अश्विन, he is world class bowler. Jadeja is world class bowler. Ashwin, he's close to 500 wickets, and I'm sure whenever he gets opportunities, he's going to get more wickets. But he's getting older now. कुछ महीने में he is now 36, 37, and although he spinner पे ऐसा बहुत ज़्यादा impact नहीं होता bowling पे, but still he's getting old. Yes, he may play for next 4-5 years. He may not. But अब और उनको इंजरीज ज़्यादा हो सकती हैं. So आपको सोचना पड़ेगा कि who can replace रविचंद्रन अश्विन when he decide to hang the boot. अभी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में there is no off spinner who can replace Ashwin. Not only in the bowling, but he is a pretty good, decent batsman. He has 5 test match centuries. तो ये आपको सोचना पड़ेगा how you're going to replace Ashwin. कौन सा लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर उनको रिप्लेस कर सकता है. यस, रविंद्र जडेजा का बैकअप आपके पास अक्षर पटेल है, हु इज़ इक्वली गुड. ही परफॉर्म्स इन द सिमिलर फैशन, विकेट भी लेते हैं, रन भी बनाते हैं, बट अश्विन का आपके पास कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है. इफ़ वी टॉक अबाउट स्पिनर्स, लेग स्पिनर, तो कुलदीप यादव चले थे, लेकिन जब से उनकी फॉर्म गई है तो कोई और लेग स्पिनर नहीं आ पाया. सो यू नीड टू स्काउट दैट टैलेंट. कौन हो सकता है इंडिया का नेक्स्ट स्पिनर जो इंडिया के लिए नेक्स्ट 10-15 ईयर्स ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट. दैट इज समथिंग यू हैव टू डिसाइड. Similarly, batting में you need to figure out who is going to replace Rohit Sharma, Virat Kohli. They are playing good, and I'm sure that they are not going to hang their boots in next couple of years. At least this World Test Championship cycle they are going to play. But you need to think about it. Similarly, you need to think about Rahane. अभी आए हैं, एक टेस्ट मैच खेले हैं, and I'm not saying that he is not going to play well, but just in case if he is out of form, who is going to replace him, so that India is not going to suffer. Shreyas Iyer, he will be back in the team. So a lot of thinking needs to be done. Proper planning, vision should be there. 2 साल 4 साल के प्लानिंग लेके चलें, प्लेयर्स को उस हिसाब से आप ब्लड करें, उनको A टूर पे भेजें ताकि they can get more exposure. Third point is making players, mandating them to play in domestic cricket, especially knockouts. कुछ दिन पहले दुलीप ट्रॉफी के लिए सारे जोन्स की टीम अनाउंस हुई, एंड देयर वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ वेयर ईशान किशन डिक्लाइन टू प्ले फॉर ईस्ट जोन. उन्होंने कहा कि ही वांट्स टू मैनेज हिज लोड, एंड सो ही वेंट बैक टू ही इज़ गोइंग टू NCA फॉर दैट. इट इज़ शॉकिंग बिकॉज पिछले 6 महीने में ईशान किशन ने हार्डली 3-4 मैच खेले इंडिया के लिए. ठीक है, IPL में आप जो कुछ करते हैं वो आपका लोड बैलेंसिंग नहीं कहलाएगा. ठीक है, और IPL ख़त्म हुए भी अब टाइम हो गया, 1 महीना हो गया. इस 1 महीने में आपने कोई क्रिकेट नहीं खेली है. इवन इन इंग्लैंड
you hardly participated in, you were not that there in that test match. So ऐसा क्या बात है कि आपने दुलीप ट्रॉफी के लिए डिक्लाइन किया? You could have presented your case much more in a stronger way अगर आप दिलीप ट्रॉफी के मैच खेलते हैं. ठीक है, अगर आपकी if you were selected in the Indian team, आप वहाँ से छोड़ सकते थे. So this is something we need to figure out. Selectors and BCCI, they have to mandate all players to play domestic cricket whenever is possible. और नॉकआउट तो सबको खेलना ही है, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सिराज शमी, कोई हो, उनको नॉकआउट मैचेस खेलने हैं. You cannot expect to win knockouts without playing a lot of them. आप 2 साल 4 साल में एक नॉकआउट खेलेंगे तो आप हारेंगे ही. उसकी जगह अगर आप हर साल 2-3 नॉकआउट खेल रहे हैं, so you will get used to it, the pressure, the environment, the expectation. जब आप इस चीज़ के used to हो जाएंगे तो automatically you will start winning. Knockout में जीतना, I mean the main thing about knockout is to manage pressure. Trust me, हो सकता है कोई प्लेयर विराट कोहली जैसा amazing batsman है who can play a lot amazing shots, but due to pressure he can play like a tail ender. Pressure can definitely impact his game. So pressure को झेलना बहुत important है. वो तभी होगा जब knockout में खेल सके. So Indian selectors BCCI, they should plan knockouts in such a way that जो भी international cricketers हैं they can play. Also BCCI has started, I hope it keeps on continuing. Before any overseas tour, India A team वहाँ जाएं, वहाँ पे खेले. India A team में आप maximum अपने test के players उसमें you can put, so that they can have that valuable practice. Similarly, इंडिया के कोई भी सीरीज शुरू होने वाली है उससे पहले make sure that there is at least 15-20 days gap जिसमें कम से कम 1 या 2 रणजी के मैचेस तो खेल सके सारे प्लेयर्स who are selected for the squad. एक मैच तो बनता है सबका, एंड डेफिनेटली वेदर इट्स अक्टूबर या दिसंबर वाला साइकिल हो, there will be some matches जो where they can play and they can show that they have those skills. India की, if you look upon India's batsmen, they are not very comfortable against spin like they used to be earlier. That is the reason अब इंडिया को बहुत ही ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली पिच बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो मैच जीत सके. Earlier that was not the case. पहले इंडिया बैटिंग पिच बनाती थी जिसपे स्पिनर को मदद मिले, बट इट शुड बी नॉट अ लॉट ऑफ स्पिन. ठीक ठाक स्पिन को मदद मिले, एंड यूजुअली टेस्ट में 4-5 दिन तक जाता था और इंडिया जीत जाती थी, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो, इंग्लैंड के अगेंस्ट हो, साउथ अफ्रीका के, सबके अगेंस्ट जीतती थी. बट नाउ बिकॉज इंडियाज स्पिन बॉलिंग प्लेइंग अगेंस्ट स्पिन हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज. अब वो बात नहीं रही है. आप किसी भी प्लेयर को देख लें, कोई भी इंडिया के टॉप ऑर्डर को देख लें, एक्सेप्ट ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सभी स्ट्रगल कर रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू डोमिनेट स्पिन. When you say dominate spin, not giving any chance to spinners to be in the game. So वो चीज़ पे ध्यान देना होगा. वो तभी होगा जब आप रणजी में खेलें, रणजी के बॉलर्स को खेलें. When you keep on practicing spin, आप एक लिमिटेड ओवरसीज खेलने के बाद एकदम टेस्ट मैच के मोल्ड में नहीं आ सकते. You will definitely face issues with that. So that's all about this video. Please subscribe and share it with your friends, like it and comment ताकि बाकी लोग भी जानें. और आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं ताकि मुझे लगे आपको अच्छा लगे कि नहीं लगा. सो थैंक यू वेरी मच एंड यू हैव अ ग्रेट डे है.